Math NCERT Geometry. First, introduction of your total book chapter. Your total NCERT book containing 15 chapter. This having many branches of mathematics like arithmetic, algebra, geometry, coordinate geometry, mensuration, aesthetics and probability. Out of this 15 chapter, from chapter 6 to 10 are totally section of geometry. Today I will start chapter 6, lines and angles. First, meaning of geometry. Geometry word made up by two Greek words, geo and metra. Geo means earth, metra means measurement. Meaning of geometry means earth measurement. Geometry basic term, point, line and plane. ज्योमेट्री के बेसिक टर्म क्या है? तीन, पॉइंट, लाइन और प्लेन. About a point, line and plane you have already learned in previous classes. In this classes we will start the basic term like angles and pair of angle. Angle means definition of angle, type of angle, two ray having initial point called angle. जैसे दो रे हैं और दो रे का एक इनिशियल पॉइंट हो, उस फिगर को क्या कहते हैं? एंगल. जैसे अकॉर्डिंग टू फिगर this figure having two ray AB and AC. Ray AB and AC having initial point A are totally this figure called angle CAB. This is called angle CAB or angle BA. Angle CAB or angle BAC is full name of this angle. Type of angles के above you have already learned in previous classes. Acute angle, obtuse angle, right angle, complete angle, straight angle, zero angle. In this stage your main study pair of angle. There are totally 5 pair of angle. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन पढ़ना हमको पेयर ऑफ एंगल. पेयर ऑफ एंगल्स. इन पेयर ऑफ एंगल्स नंबर फर्स्ट पेयर adjacent angle. Second, linear pair angle. Third, vertically opposite angle. Fourth, complementary angle. Fifth,
supplementary. In this stage, you will study about of these 5 pair of angles. Number first, adjacent angle. Second, linear pair angles. Third, vertically opposite angles. Fourth, complementary angles. And fifth, supplementary. For best performance, first study meaning of adjacent angle. The meaning of adjacent angle. Note that a pair of angles having a common vertex, a common arm, and their non-common arm lie opposite to common. यानी दो एंगल्स इस प्रकार हो कि उसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, उनके एक आर्म कॉमन हो और उसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड हो, वैसे पेयर को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। चाहो तो नोट कर लो एडजेसेंट एंगल। A pair of angles having common vertex, common arm, and their non-common arm lie opposite to common arm called adjacent. So this is definition of adjacent angle. A pair of angles having common vertex, common arm, and their non-common arm lie opposite to common arm called adjacent angle. By figure to study adjacent angle, so this is figure of adjacent angle. In this figure, watch that how many angles in this. By simply looking, you see that 2 angles, but if you watch immediately, you obtain this figure having totally 3 angles, namely angle BAC. This total angle, angle BAP, this angle, or angle PAC, this angle. In this figure, having totally 3 angles, but these 3 angles are not adjacent angle. By definition of adjacent angles, only 2 angles may be adjacent. Your main study think out of these 3 angles which are adjacent angles. So certainly, according to definition of adjacent angle, we watch that common vertex is A, common arm is AP, and their non-common arm is AB and AC. इस फिगर में कॉमन वर्टेक्स ए जो कि तीनों एंगल के लिए कॉमन, इसमें कॉमन वर्टेक्स ए के अतिरिक्त यदि हम कॉमन आर्म लेते हैं
AP is common arm, और AP के फेवर में यदि नॉन कॉमन आर्म को देखते हैं तो AB और AC क्या है? नॉन कॉमन आर्म। तो वी से दैट अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल BAP and angle PAC are pair of adjacent angle. Clear that? According to figure, angle BAP and angle PAC means this angle and this angle are pair of adjacent angle. अब यदि कोई डिस्कस करता है कि भाई एंगल BAP एंड एंगल PAC आर एडजेसेंट एंगल, तो वी से दैट एंगल BAP एंड एंगल PAC हैविंग कॉमन वर्टेक्स A अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। देखो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्क AP, common arc AP and their non-common arc. The non-common arc are AB and AC. This common arc AB for angle BAP and this arc AC for angle PAC. According to figure, this equation of AB and AC are opposite to A. Certainly, we say that this angle and this angle are pair of adjacent angle. यदि कोई डिस्कस करता है कि भाई एंगल BAP एंड एंगल BAC आर नॉट एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल BAP और टोटली एंगल BAC एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है, डिस्कस कर। सर्टेनली फिगर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं कि BAP और एंगल BAC में कॉमन वर्टेक्स A है, दोनों एंगल का कॉमन आर्म AB है, लेकिन इसके जो नॉन कॉमन आर्म AP और AC है वह इस कॉमन आर्म के दोनों सेम साइड, जबकि डिफिनेशन हमको क्या स्थिति चाहिए कि ये नॉन कॉमन आर्म के ऑपोजिट है। इसलिए हम एंगल BAP और एंगल BAC को एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट definition of linear pair angles, vertically opposite angles, complementary angles, supplementary angles we study in next class.